Good evening, everyone. Welcome to MBA Karo. Today was the first day of MHCT 2025, and it turned out to be a bouncer. Okay, maybe first slot also people are saying that it was difficult, but I appeared on the second slot, so can tell that it was very difficult paper because the questions were copied from examinations like CAT and XAT. Some of the questions I clearly remember. There was one question on a person has four post offices. The person has to deliver some courier, right? So that was copied from Z. Then there was one question on avocados, right? That had appeared in CAT, I think, ZAT in 2021 or 22, which was basically about eggs. They changed the words from eggs to avocados, but that does not mean that people do not know that question. So a lot of questions in the paper were copied from CAT and ZAT, even the RCs, or you talk about the grammar questions. So a lot of copy paste was there. And if I talk about the reasoning section, it had a lot of questions from quant. So out of, I would say that instead of 75, although they called it logical reasoning, ठीक है, I would say कि logical reasoning had 50 questions और quant will have 75. ऐसा पैटर्न रहा होगा, quant के 75 रहेंगे. LR में बहुत सारे quant के क्वेश्चन थे, right? So those who appeared on second slot, please do comment here that how did you find the paper, right? And how many questions you attempted in the examination. So do let me know in the comments कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, बिकॉज आई फेल्ट कि पेपर तो डिफिकल्ट था डेफिनेटली. मेनी ऑफ यू वुड अग्री. कोई ऐसा है जो एग्री करेगा कि पेपर आसान था और इट्स जस्ट दैट इट वाज माय बैड डे एंड आई एम टेलिंग द पेपर इज डिफिकल्ट? कोई है जो कहेगा कि पेपर इजी था या डुएबल था? आई बिलीव कि पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि पेपर डिफिकल्ट था? So if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel to get updates on all MBA entrance examinations and great content for all exams. So we had some like 20-day daily drill also. So probably ऐसा हो भी सकता है कि जो हमने DILR उसमें दिए थे उसमें से भी कुछ आ सकता है एग्जाम में. So be prepared with that as well. How many questions you attempted? Give your number of attempts. This will give you some. This will give us some understanding कि लोग कितना कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने में कितना स्कोर पे कितना परसेंटाइल बन सकता है, राइट? सो अभी ऐसे कोई लाइक आई विल पर्सनली बिलीव दैट पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, टू लेंदी. Reasoning was dominated by quant questions. Then they had difficult DILR copied from CAT and Z, so definitely not possible to attempt a good number of questions in this. uh, except some miscellaneous questions in reasoning. Except that the abstract reasoning part, rest of the portion I found quite difficult. जो verbal part भी है, verbal was either difficult RCs, few grammar questions were doable. Then the vocab was just insane, right? I will show you the words. तो जो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर ऐसे ही कह रहे हैं, vocab के अभी मैं वर्ड्स दिखाऊं तो आपको देख लेना, उसमें से आपको हार्डली दो या तीन कोई वर्ड आते होंगे, राइट? ऐसे ऐसे वर्ड जो आपने सुने भी नहीं होंगे. एंड ऑप्शंस वर आल्सो of that kind, right? So if you agree, please comment on the video so that लाइक अदर्स ऑल्सो फील कि हाँ ये जेन्युइन बात बता रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दे कि पेपर अच्छा नहीं गया तो टफ बोल दिया. इट इज नॉट द केस. ओके, सो शेयर योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट इन द पेपर, सो दैट वी गेट टू नो, और थोड़ा एक अप्रोक्सीमेशन पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है इस पर्टिकुलर स्लॉट की. Okay, all right. So let's now see the distribution. They had mentioned 75, 25, 50, and 50, right? Logical reasoning actually did not have 75 questions. There were a lot of QA questions. काउंट नहीं किए कितने थे, करीब एटलीस्ट 20 तो होंगे, 15-20 तो एटलीस्ट क्वेश्चंस होंगे क्यूए के क्वेश्चंस. सो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉट ऑफ क्यूए क्वेश्चंस. तो टेक्निकली मुझे तो ये लगा कि 50-75 ना हो, बिकॉज क्वांट तो 50 पूरा ही था, उसके अलावा लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द रीजनिंग सेक्शन एज वेल, राइट? सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एट 25 क्वेश्चंस. देन 50 क्वेश्चंस ऑन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये जो उनका पैटर्न रहता है सेक्शन वाइज था. आई वुड से इंटरफेस वाज नॉट गुड, राइट? तो अगर इंटरफेस की भी बात करें, सो यू हैड टू चूज सेक्शन फ्रॉम हियर. नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? कभी क्या होता है कि पूरे 200 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको सेक्शन चूज करना था, राइट? सो सपोज आपको लॉजिकल रीजनिंग चूज करना है, बाय डिफॉल्ट लॉजिकल रीजनिंग आएगा फर्स्ट,
यू हैड टू चूज अ सेक्शन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, राइट, 1 2 3 4 ऐसे करके पैलेट होगा, एंड द स्क्रोलिंग वाज नॉट स्मूथ। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि स्क्रोलिंग स्मूथ नहीं थी? क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है। आप आरसी पढ़ रहे हो, स्क्रोलिंग अच्छे से नहीं हो रही, यू कैन नॉट एक्सटेंड द व्यू, राइट, देन इट डज नॉट फील लाइक सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर कभी आपने कैट वगैरह का इंटरफेस देखा है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, ऐसी स्क्रीन होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट होता है, राइट, और यहाँ पे एक एरो होता है, उस पर क्लिक करो तो स्क्रीन वाइड हो जाती है, राइट, सो यू कैन इजिली सी द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज completely, but it was not the case here. One had to scroll very bad to read the passage and then to read the options also. Most of the questions, only four options were visible, right? For the fifth option you have to scroll down, right? So interface wise not good thing, but if questions are easy then does not matter, but questions भी challenging है तो ये काफी time consuming चीज होती है, so that was worth noting. Now section wise difficulty level बात करें कि logical reasoning was difficult just because there were a lot of quant questions. Although I'm very good at quant, but I would say that क्वेश्चंस वर नॉट इजी, क्वांट बहुत लेंदी था, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, राइट, डेफिनेटली द पर्सन हु डज नॉट नो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू सॉल्व दीज, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इट वाज द इजीएस्ट सेक्शन। एक ही सेक्शन था जो काफी इजी था, वो था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, राइट, उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते थे, और आई गेस 20+ वॉज वेरी इजी टू अचीव। हो सकता है कई लोगों के 25 और 25 भी बन जाए, बट 20+ वॉज इजीली अचीवेबल, क्योंकि उसमें आपके कुछ कुछ मे बी फिगर काउंटिंग है, कुछ हो सकते हैं इसमें ट्रिकी हो सकते हैं, वरना सीरीज बेस्ड और वट एवर क्वेश्चन दे वर वेरी सिंपल एंड इजिली डन विद इन 15 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन बहुत लग रहे थे, लेंथी क्वेश्चंस थे, एंड देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक्स लाइक algebra, right? There were questions on probability, one or two questions from probability also. Modern math, some of the questions I found errors also. Like कुछ तो मुझे गड़बड़ लगे, because there is not much time in the examination, so I let it go. One of the questions which I remember, that 0 2 3 4 6, जिससे even numbers बनाने थे, right? And one of the questions was multiples of 6. I think that was the only question, multiples of 6. That was not fitting, and few more questions. So there were 3 4 questions at least in which I did not spend too much time, because I realized कि paper attempt नहीं हो पाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपको वो क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए, बट देयर वर सम क्वेश्चंस दैट हैड एरर्स आल्सो, सो जब रिस्पॉन्स शीट आएगी सो देन वी कैन टेल द क्वेश्चंस टू चैलेंज। Logical reasoning definitely difficult. It had lot of QA questions. It had lot of DILR which were copied from CAT and Z, right? So 1 or 2%, 1 or 2 questions per set. Like if you imagine एक CAT 2017 का पेपर देखना, उसमें एक एयरलाइंस वाला सेट था, ठीक है, आप उस सेट को करने में ही आपको 15 से 20 मिनट्स तो उस सेट को करने में लगेंगे, और इसमें इनने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था उसमें से, सो देयर वर जस्ट इनसेन DILR copy pasted from CAT and ZAT previously. There was one from ZAT which had like male and female shoppers, right? It was also quite difficult. So LR very very difficult, quant difficult. क्वांट मैं कहूंगा कि फिर भी डुएबल होगा इफ समवन इज गुड एट क्वांट। एलआर में कोई कितना ही अच्छा हो जाए, a person cannot do very well on this, right? So it was, I would rate it very high difficulty level, just because of those insane DILR puzzles, right? So that consisted a significant portion, at least 15 क्वेश्चन वो DILR puzzles से आए थे, वो नॉन डुएबल थे। अगर किसी को आंसर याद है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Then quantitative aptitude, again calculation based. Verbal ability moderate to difficult. Now some might say कि moderate था, अगर किसी के RCs अच्छे हैं, ठीक है, so there were like around 20 odd questions from RCs, right? uh, RCs were lengthy to read, lengthy मतलब cat और zat के passages थे वो। Second thing was, if I talk about the non RC part, grammar, और grammar को छोड़ दो, grammar was the only easy thing. Rest of the things vocab, now I will go show you the vocab questions also, you will realize कि vocab बहुत गंदी आई थी, right? So yeah, it cannot be 160, it will be around 130 at max. I don't think anyone would touch, maybe sir might have done 160, but I don't think people would be able to go beyond 130 135 genuine attempts, right? Overall the paper was very difficult, right? So maybe some people might have their own uh,
like say about the paper, but in my opinion it was very difficult. Now, if I talk about the exam highlights, section wise questions were there, right? But LR had several questions on quantitative aptitude. ये हमने बात की. DLR sets from CAT and Z. Directions के कुछ questions थे, syllogism थे, two three questions on directions. There were some questions, three four questions on syllogisms, blood relations, coding decoding series. Right? All these were kind of questions in the LR section. Okay. Then if we talk about abstract reasoning, it had a lot of questions on water mirror images, figure counting, embedded pattern completion, series analogy, odd one out. All kinds of questions were present. It was easy, right? Water mirror image तो बहुत easy होता है. There were some questions on figure counting, वो हो सकता है कि time लगा होगा. Otherwise, embedded pattern completion, series analogy, all had simple logics. So this was the easiest section. Now coming to the quant, there was no DI, right? Interesting part was no DI in uh, the quant section this time. कभी होता है कि दो तीन DI set आ जाते हैं. There was no DI set. All were word problems, right? And they were dominated by arithmetic, but there were a lot of questions from geometry also. Few algebra, two to three questions algebra के आए थे. Numbers के भी तीन चार questions थे. Modern math के भी I think तीन चार questions. So around 10 questions from these three, and geometry maybe 4 5 questions, geometry mensuration 5 questions, mostly dominated by arithmetic. Okay. Now VRC, it had I think 6 or 7 passages. I did not count the entire number of passages, but there were at least 3 to 4 questions per passage. So around 20 questions, last के 20 questions passages में थे, right? They were CAT Z passages, 10 plus vocab questions. और अभी यार जब को vocab के questions दिखाऊंगा तो क्या कहते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, vocab was just insane, right? And then you had grammar questions that was easy. Parajumbles were doable. ये पैराजम्बल्स ग्रामर ये थोड़ा इजीली डुएबल चीज थी, इसलिए आई वुड से दैट दिस वाज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ आपने चाहे अगर एक दो पैसेज पढ़ ली होंगे, कुछ एक वोकैब आती होगी तो आती होगी, रेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के एक आध क्वेश्चन थे इजी थे. ग्रामर पैराजम्बल दोस वर द इजी टाइप्स. ओके. सो abstract reasoning में numbers question that was average. I do not recall the answer though, but वो average आ रहा था. I think 17 था उसका आंसर. Okay, so cutoff prediction, like see cutoff, of course, like it is a joke, because like uh, when we talk about MNCT, they are notorious for not having normalization. Okay, now if I talk about the cutoffs, right? For JPIMS, I believe कि 99.99, which is for OMS candidates, it could be around 130, right? Approximately 130 के around जाएगी. I don't think it will go beyond that. जो 160 कह रहा है, that looks a very extreme number to me, right? 160 not possible. ठीक है, 130 के around जा सकती है, right? 99.9 could be in around 120. ठीक है, 120 से 125 के बीच में, अब डिपेंड करते हैं कितने लोग फॉल करते हैं. सो वन आई बिलीव दैट अर्ली 120s that could possibly think, right? And then we have like अगर आपको 99 point, like if we talk about Sydenham, right? Sydenham की 99.8 के करीब जाती है. This is for JPIMS, this is OMS, and this is Maharashtrian states, right? And Sydenham की कट ऑफ करीब जा सकती है 115, close to 115, right? Then like अगर आप बाकी कॉलेजेस की बात करें, वेलिंकर, पुम्बा और ये सब जो बाकी आते हैं, राइट? सो जो टॉप 5 6 क्वेश्चन, 5 टॉप, यू कैन कॉल इट 5 6 इंस्टीट्यूट्स, इनकी कट ऑफ क्लोज टू 105 से 110 के बीच में जा सकती है, राइट? एंड टॉप 10 में भी एट 100 marks, top 10 institutes at 100 marks. Okay, so that could be the expected cutoffs as per my understanding of the paper, because now we will see the questions, right? So जो लोग सोच रहे हैं कि अरे like बहुत ज्यादा कम कट ऑफ बता दी, so like we will see the questions. So the ones who did not attempt in the paper can watch this. So please do like this video and appreciate our efforts to bring out the questions, right? And to tell you that there were few questions on phobias also.
So our team has recently created one PDF on phobias. उसको देख के चले जाना, ठीक है? एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाएगा, तीन चार आ गए, राइट? So there were three questions, I think three questions on phobias, and they were interesting, which people generally do not know. All right, so let's see the questions. I hope you must be waiting for the questions. So let us see them. So these were the questions, right? अब आप vocab में आप मुझे बताओ कितने लोग, आप कमेंट करके बताना कि कितने questions हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, 11, 12, right? So these are vocab based questions. So in 12 में से आपको कितने words आते थे? ओके, डू लेट मी इन द कमेंट्स, क्योंकि आपको लग रहा होगा कट ऑफ इतनी जाएगी, तो देखो vocab होता तो जल्दी है, राइट? ये 12 क्वेश्चंस करने में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, बट इमेजिन आपको कितने वर्ड्स आते हैं अगर लाइक लाइक अगर आपको लगता है कि इसमें से बहुत ज्यादा वर्ड आते हैं, देन गुड, राइट? सो आई डू नॉट बिलीव इन अदर एजुकेटर्स, व्हाट अदर एजुकेटर्स से, राइट? आई गिव माय ओन एक्सपीरियंस बिकॉज many of the educators may not have even appeared on the examination, right? So I do not trust any such sources. As per my opinion, आप खुद बताओ कि आपको इनमें से कितने आते हैं. किसी को 12 में से 10 भी आते हैं तो बता दो, ठीक है? 12 में से 5 भी बहुत कम लोगों को आते होंगे ये वर्ड्स में से, राइट? आते किसी को नहीं आते ना, देखे भी नहीं होंगे वर्ड्स ना. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट, इट इज इजी टू से कि हाँ कट ऑफ इतनी जाएगी. वो कैप बेस्ड आए थे, वो कैप के क्वेश्चन भी कैसे आए थे कि तो देखो, आई न्यू ओनली टू ऑफ द वर्ड्स, राइट? आई न्यू ओनली टेनुएट एंड मार्टिनेट. दीज आर द ओनली टू वर्ड्स आई न्यू आउट ऑफ दीज, राइट? तो किसी की मान लो इंग्लिश बहुत अच्छी भी होगी तो 5 6 से ज्यादा वर्ड्स नहीं आते होंगे, डेफिनेटली, फॉर श्योर, ठीक है? सो एंड देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब आपको बताना था चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एंड द वर्ड वाज दिस. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? Right? So you might not have heard of most of these words. So definitely ये अगर 12, अगर मान लो ये 12 13 वर्ड्स हैं, इसमें से 5 मैक्स टू मैक्स को बहुत अच्छा भी होगा वो कैम में, वो आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर किसी के सही होंगे, राइट? तो 8 7 8 मार्क्स तो यहीं चले गए, राइट? कैट के DLR सेट्स आए थे, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस आपको किसी को आंसर ही याद है, तो वो गए, राइट? देयर वर लॉट ऑफ क्वांट क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट अटेम्प्ट. डेफिनेटली बता रहा हूँ कि उतना नहीं जा सकता. सो इन माय ओपिनियन द कट ऑफ विल नॉट गो बियॉन्ड 130, राइट? इट इज जस्ट इनसेन इफ यू कैन अटेम्प्ट मोर देन दैट, एंड लेट अलोन विद आरसीज, ठीक है? आप आरसीज तो अटेम्प्ट करने की बात ही नहीं हुई, अभी आरसीज भी करने थे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, द पेपर वाज एंटायर वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, डू नॉट ट्रस्ट, राइट? देखो कट ऑफ मैं 30 बोलूंगा, कोई 160 बोलेगा, कोई 170 बोल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ना. Okay, so whoever you wish to trust, you can trust them for the cutoffs. That's fine. I'm giving my opinion, right? Then there was one question, easy ki peel hai, to you had to match the analogy. So it was homonyms, right? So these were some of the questions on uh, the vocab questions. Then grammar based was easy. Grammar were copied from ZAT, but they were easy. Spotting the errors, it one of the questions was repeated 2 times. उसका आई थिंक शायद BDF था आंसर या ADF था, ऐसे याद नहीं आ रहा. एक क्वेश्चन 2 टाइम भी आया था, आई रिमेम्बर दैट क्वेश्चन. एंड देन ग्रामर वर 4 5 क्वेश्चंस वर देयर आई वाज स्पॉटिंग. देन फिल इन द ब्लैंक्स कुछ कुछ थे दैट वर इजी. पैराजंबल भी डुएबल था, बट योर RC वर लेंथी, and it was taking too much time to read the passage and then answer the questions because of the interface. Okay, so that was about the memory based questions of uh, English. So there were questions which were asked on phobia. So our team has created one PDF on phobias, right? So you can get it on our Telegram group. So please do join our Telegram group. So shared on that. Then some of the reasoning questions which were easy ones, like easy मतलब जो लिखे हुए हैं ऐसे, not that कि these were easy. Okay, so I will keep discussing the questions. एक ये था series वाला, इसका आंसर था 54. Basically it was 1 2 3 2 times into 3 times, right? Into 2 times into 3 times into 2 times into 3 times, right? And this is 2 into 3 6, 6 into 3 18. So 18 into 3 54, right? So the answer was to this question was 54, right? In this 440 was the wrong term. मतलब ये तो मैंने ऐसे कर दिया था कि इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड आ रहे हैं,
The logic was minus 12 square, minus 10 square, minus 9 square, minus 8 square, ऐसे करके आपका लॉजिक था, राइट. दिस आंसर वाज x, 288th term. So it was sum of first and natural numbers. Using that concept, one had to solve, right. This was easy one. You had to subtract from 26. So d is 20 to 4, so this is 22. So इसका आ जाएगा आपका t, uh, ये आएगा 21, that is u. M is 13, so m. A y 14n, and e is 21, which is u. Okay, so this was the answer to this. Okay, so how many of you did this question? कैलेंडर वाला आंसर वाज फ्राइडे टू दिस. अब इसको कैलेंडर्स का कॉन्सेप्ट आता है. They would have done it hands 23 minutes apart. It was at 9:24. How many of you got the answers right? So ये भी देखते रहना कि आंसर्स कितने आपके सही आते जा रहे हैं. आई विल कीप राइटिंग द क्वेश्चंस एंड यू कैन टेल योर आंसर्स. मतलब सारे तो मैंने भी नहीं अटेम्प्ट किए, पर जो जो मुझे याद है. एक लॉजिकल एंड फेस वैल्यू, वो बचपन का क्वेश्चन था, वो तो इजी था. वो बचपन में कराते हैं ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू. इसका आंसर था 6,993, राइट. देन देर वाज what I've written hotel. I don't know why I've written hotel. One of the series questions is this, which I did not write here. S2E U6D W21C. I marked Y66B as the answer. I don't know how I got 66, because YB तो वो नहीं था, एक ही option था. So Q plus 2, this was increasing by 2, right? So that is why it was Y, and it was decreasing by 1. Okay. I don't know how the number is being generated, but that was the only option, Y66B. Okay, so one of the answers was this. Then we had एक डायरेक्शन का आंसर था 45 मीटर ईस्ट. ठीक है, एक का आंसर था ग्रैंड मदर आ रही थी एक में कोई, राइट. एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जिसमें ग्रैंड मदर आ रही थी. देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन बी बायस. That was easy. B buys Q and U. Okay. Then there was one question on. I've written 4 pass. I don't know why. What was the answer? What was the question? 4 pass. One of the question was 48.55. Yes, you are right. 48.55 was one of the answers. Okay. होटल का आंसर था. होटल का, हाँ, होटल जैड का क्वेश्चन था. Y88 था और 66 था, आई डोंट रिकॉल. लाइक ऐसे Y88 था, और मे बी Y88 भी होगा. ओके, बट 11 का मल्टीपल कोई आ रहा था, दैट आई रिकॉल. एक था वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था, उसका आंसर था 10, जिसमें वो लाइक नीदर एक 70 आ रहा था, 50 आ रहा था, और आई थिंक 70 70 50. आउटसाइड वाला पूछा था, नीदर वाला, तो 10 आंसर था. Okay, then there was one C had 31 cards. Did you attempt this question, which said that C had uh, there were like some people were having some cards, right? So there was a question like that. C के number of cards पूछे थे, isn't it? So C 31 cards, and then you had एक question ये था कि there were a lot of questions in रीजनिंग सेक्शन विच वाज आस्क्ड ऑफ क्वांट, राइट. सो एक ABCD था जिसमें रेशियो दिया था 2:3, 4:5, 6:7. इसका आंसर था 1280. दिस वाज वन ऑफ द आंसर्स. वन ऑफ द आंसर्स इज हैंड्स, जो हैंड्स ऑफ क्लॉक वाला था, उसका आंसर था 67 टाइम्स. ओके, बिकॉज
every day 22 times, so it was 3 days इंटू 22. ठीक है, फिर वो जो 10:30 टू 11:15 दिया था उस बीच में एक और बार ओवरलैप करेंगे, सो +1 देयर वाज 67 टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक ओवरलैप करेंगी. एक था 13 मीटर नॉर्थ, वन ऑफ द डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन. एक का आंसर था 378 किलोमीटर, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था कि एक 1 PM पे स्टार्ट कर रही है, एक 2 PM पे स्टार्ट कर रही है, दे मीट एट 3:40 PM, right? And this distance was given, right? So the total distance was, I think this distance was given as 168 or so. So total distance was 378 kilometer for this question. Okay, so this was one of the answers. Okay, then there was one blood relation thing. It was B and C, and one was four females, and one was D and E के बीच में रिलेशन पूछा था. So they are sisters. Okay, ये पूछा था कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन से, कपल के पेरेंट्स पूछे थे, पेरेंट्स ऑफ कपल or something like that. B and C was one of the answers. One was four females. D, E were sisters. Okay. So this was these were some of the answers. Now there was one question on thief, जिसका आंसर था 15 किलोमीटर. Policeman is chasing thief. Now you would think ये question छोटा था. There were question like story थी पूरी कि policeman is chasing thief, he is running, and then speed of the thief was given, speed of policeman was given, another policeman start. So it took a lot of time to read the question and solve it, right? So that was the the question, right? Then there was, I have written 21. मिक्सचर का क्वेश्चन था. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर मिक्सचर्स आल्सो. इट वाज आंसर वाज 21. देन A+B+C आपको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था 8. इट वाज अ प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. इसके आंसर आते हैं 6 सॉल्यूशन. ए को मिनिमम 1 देना है, 2 देना है एंड 3 देना है. सो इट वाज दैट डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, so that was 15 kilometer. That was at the same speed as the thief. Okay, and then you had, there was one question which said that PQRSTUV are sitting here. So V is in north, so S will be in southwest. Because उसमें दिया था alphabetical order में बैठे, तो STU ऐसे होंगे, तो S will be at the southwest, right? So this was one of the questions. And then we had वो जो बटन वाला था, Z का क्वेश्चन था. Its answer was 13. Then QR जिसमें आ रहा था उसमें 7 पार्ट्स आ रहे थे. अगेन दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट रिकॉल एग्जैक्टली. उसमें कुछ था कि ए से बी में पाथ हैं, बी से लाइक PQRS. It was indeed a very difficult question. I used the options to get the answer, but fortunately my answer was correct. उसमें कुछ ऐसा दिया था कि P से Q में जाने के रास्ते हैं, Q से R में जाने के रास्ते हैं, R से S में जाने के रास्ते हैं. Q to R 7 were there, R to S 2 paths were coming. So कुछ तो था, मतलब like P से R में ऐसे जा सकते हैं. So it was a very long question, right? So those who saw the paper only would know. जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तब देख लेना क्या क्वेश्चन था, राइट? मुझे भी पूरा क्वेश्चन याद नहीं है. कुछ ऐसे था कि लाइक P to Q जा सकते हैं, यहाँ से 62 वेज हैं. P से R जाने में डायरेक्ट रूट नहीं थे, इनडायरेक्ट कितने तरीके. सो आई डिड दैट, लाइक कुछ तो करना होता है ना टफ वाले भी. तो आई डिड दैट क्वेश्चन. It was 7 paths. Okay, if anyone attempted this question. Okay, then there was one question on, again these are all asked in the reasoning section. Mathematics को जो arrange करने वाला था जिसमें vowels together थे, the answer was 120960. Okay, one question was 6:43 and it was asked 4:29. So I applied the logic into 7 plus 1 here and marked accordingly. एक मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर आ रहा था 27:13, राइट? देन देर वाज 20 and 8, उसका आंसर था 160, बिकॉज नंबर्स आ रहे हैं आपके 14 and 6, 14 स्क्वायर माइनस
6 square, right? So one of the questions was 160. This was easy one, right? Then one of the questions was divisibility, 8760375. तो इसमें 0 and 5 थे digits. Divisible by 225 was the question, right? It was asking that it is divisible by like the numbers are divisible by 225. So you had to find these missing digits. PQ दिए थे. So that was the answer, right? Now these were asked in the LR section, right? ये अभी सारे LR के क्वेश्चन चल रहे हैं. LR में क्वांट भी बहुत आई थी, लाइक ये क्वांट का क्वेश्चन हो गया, ओके, ये क्वेश्चन क्वांट का हो गया, ये क्वेश्चन क्वांट का हो गया, ये क्वेश्चन क्वांट का हो गया, क्वांट 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 क्वांट. सो एटलीस्ट लाइक आई वुड से कि इफ नॉट 25, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस तो क्वांट के उसमें भी आए थे. Okay, so these were the answers to the questions which I attempted, and I'm sure of. Yeah, so this is particularly the. अगर कोई और कोई क्वेश्चंस याद आ रहे हो तो बताते रहना, ठीक है? So these were one of the questions. Four pass. I have written four pass. I don't know कि what was four pass. Did I mention this? I have written four pass. I don't know what was that four pass. अच्छा, फोर सब्जेक्ट्स में पास होंगे, हाँ हाँ हाँ. सो दैट वाज वन क्वेश्चन, फोर सब्जेक्ट में पास होंगे, जिसमें रेशियो दिया था. अगेन दैट वाज सम ओल्ड कैट क्वेश्चन, like 10 ratio 9 ratio 8 60% passing percentage, etc. Okay, so these were the reasoning questions. Now quant की question देख लेते हैं. Like I'm telling you the answers. uh, okay, so PQR जिसमें दिया था कि they invest 5 ratio 6 ratio 6, right? And something was given they were for 1 year, and this was 6 months, right? So the answer was R invested was 2,10,000. ठीक है, इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी थी. जब इसकी रिस्पॉन्स शीट आएगी देन यू विल सी द क्वेश्चन. इट सेड दैट they invest in this ratio and the profit was given 98,000. The profit was saying that the profit was equal to uh, 20% of the investment, like that. Okay, so that was one of the answers. Then there was one answer like x plus 6 root 2 raised to the power 1 by 2 minus x minus 6 root 2 raised to the power 1 by 2 is equal to 2 root 2. इसका आंसर आ रहा था x equal to 7. Right, how many of you did this question? No, sorry, x equal to 11 आ रहा था, right? X minus 4 7 आ रहा था. Then there was one question which said that 16 18 20. This was easy, number system इनसे remainder 4 बच रहा है. So answer to this question was 18,004. Then there was one circular race, और इसमें दिया था कि एक 200, like answer to this was 10 minute, कुछ 200 की एक की स्पीड 200 मीटर्स पर सेकेंड, 200 आ रही थी, एक की कुछ तो 400 थी. ओके, सो then there was one question on one was easy, 8796 को 300 से मल्टीप्लाई करना था. So you can multiply and get the answer. So 264 minus 12 263 88 263 8800 ये आंसर होगा. Basically it said that into 277, right, plus like 8796 into 23. So easy question tha. So some of the easy pickings, one of the rare questions was easy in quant. Then there was like average वाला question था 1350, मतलब वो दिया था कि maximum possible average क्या हो सकता है. So there were different integers. इनका average 14 दिया था, इनका average 28 दिया था. So you have to find for the 6 integers. So you will choose the highest possible integers and you will get the average as 135 by 6, which is equal to 22.5. Okay, so uh, like that was the question. Then one of the answers was 770, कुछ 7 by 8 minus 7 by 18th of a number, ऐसे कुछ question था. That was 770. And नहीं, this was 15840.
हाँ, इसमें डिफरेंस दिया था। बेसिकली द क्वेश्चन वाज 7/8x माइनस 7/18x इज इक्वल टू 770। इसका आंसर आया था 15840। ओके, देन देर वाज लाइक 100 से 200 के बीच में n है, it is even and not divisible by 7, not by 9. The answer was 39 such numbers. Okay, then there was another question on HCF LCM का आंसर 84 था। एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 1:4 में पूछा था। So the numbers were 21 and 84. Then one of the questions which I found wrong was, you calculate the answer, tell me in the comments. 4-digit number divisible by 6. आई डिड गिव सम टाइम, बट फिर वहां पे ये होता है ना कि आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। ये आपको यूज करना है 4-digit नंबर बनाने, पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी 4-digit numbers will be found. So do let me in the comments. I found that this question was wrong. एक कुछ ऐसा था, उसका आंसर 207 था, जिसमें 3:4:2 3 नंबर्स आ रहे थे। वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री, लाइक इट वाज लाइक प्योर ज्योमेट्री क्वेश्चन। अगर किसी की ज्योमेट्री अच्छी है तो उसने करा होगा। 6, 8 और यहाँ पे ये सर्कल बना रहे हैं, यहाँ से इसको रेडियस लेके। सो द आंसर टू दिस वाज 3:8, राइट। सो इसका रेडियस आएगा 4.8। सो ये बचेगा 1.2, ये पार्ट का रेशियो वर्सेस ये पार्ट का रेशियो। सो ये बचेगा 3:3.2। सो ये पार्ट हो गया 3.2। सो रेशियो वाज 3:8। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस क्वेश्चन? देन एक था 120,000, जिसमें कुछ वो फोन कुछ ऐसे यूपीआई, आई थिंक ये जैट का क्वेश्चन था, यूपीआई कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट पे ले रहा है, राइट। सो दैट वाज द आंसर। देन एक वाइट ब्लू रेड बॉल्स थी, दैट आई वाज नॉट गेटिंग द राइट आंसर। देन इनपुट पाइप 8 मिनट्स लेता है, इनपुट प्लस आउटपुट, लाइक इनलेट एंड आउटलेट 10 मिनट्स लेते। हाफ पूछा था, हाफ विल टेक 20 मिनट्स। हाफ एम्प्टी पूछा था, so it will half empty in 20 minutes. Then there was another algebra question, 2 to the power x minus x minus 1 equal to 0. I got two solutions by hit and trial. दो सॉल्यूशन आते हैं, 0 और 1 x की वैल्यूज। ओके, या सो पावर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। एक जैड का क्वेश्चन आया था, 11 एवोकाडोस जिसका आंसर था। दैट वाज डायरेक्ट कॉपी फ्रॉम जैड, जस्ट दैट द नेम चेंज द नेम, बिकॉज कुछ जैड के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद रहते हैं, राइट। जैड का पेपर ऐसा आता है कि लाइक आपको याद रहता है कि हाँ ये स्टोरी थी उसकी, कुछ वो फ्रिज में रखता है और कुछ स्पॉइल हो जाते हैं, ब्रोकन, राइट। सो आंसर वाज 11। इट वाज दैट आई थिंक 21 या 22 में कभी आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, उसमें होगा। देन देर वाज वन क्वेश्चन 3:4, उसमें कुछ ऐसे था कि ऐसे ये कवर कर रहा है, 3:4 आ रहा था, लाइक डायगनली कवर कर रहा है, ऐसे करके कुछ था। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज एलसीएम बेस्ड, राइट, कि जिसमें एक था कि वो राउंड कवर कर रहे हैं, it was like A is covering in 60 seconds, B will cover in 90 seconds, C in 40 seconds, and D in 80 seconds. Right, so these were all very lengthy questions. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ए बी सी डी पूरी आपको स्टोरी पढ़नी थी, बस सॉल्व करना था। So the question was like they all meet at the starting point, right? So starting point में meet करेंगे तो total कितने rounds होंगे? Total 47 rounds was the answer to this. क्योंकि A इनका LCM आएगा 720. So in 720 seconds, A will complete 12 rounds, B will complete 8, 18 and 9. So 20, 47 total आपके rounds हो जाएंगे. And then there was one question like 9 to the power x minus 2, right? Minus 2 raised to the power 2x minus 2.
is equal to 4 to the power x minus 3 raised to the power 2x minus 3, right? So it had value as 3 by 2, x equal to 3 by 2 इसका आंसर आ रहा था. Now I mean the ones who are saying कि 160 कट ऑफ जा सकती है, टेल मी कि क्या आप इतने सारे क्वांट के क्वेश्चन कर सकते हो, क्या उतनी वो कैप कर सकते थे? डेफिनेटली नॉट, राइट? लाइक आई एम वेरी गुड एट क्वांट, वेरी वेरी गुड. आई नो वेरी गुड टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चन, बट स्टिल स्ट्रगल्ड इन दैट क्वेश्चन. एक में बोर्ड की स्पीड आ रही थी 28 ना. अगर आप बाद में पेपर देखोगे, द वंस हु अटेम्प्टेड द पेपर वुड अग्री कि पेपर बहुत लेंदी था, राइट? द वंस हु हैव नॉट येट अटेम्प्टेड, बाद में जब आप रिस्पॉन्स शीट दोगे तब पता चलेगा, बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट द पेपर वाज वेरी लेंथी. मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रिक, इसी को सॉल्व करने में टिपिकली 2 to 3 मिनट लग जाते हैं. Okay, one of the probability questions was wrong. Tell me, did you get the same answer? उसमें मेरा आंसर आ रहा था 7/8, but this was not in the options. उसमें था कि like 6 black और 4 red ऐसे कुछ था. So it said that at least one red, ऐसे जो भी मतलब कुछ स्टोरी थी. I have not written the entire story. I was getting the answer 7/8, but that was not in the options. I just avoided that question. So there were at least 4 or 5 questions which I found wrong. So I did some time, but because बहुत सारे क्वेश्चन करने थे, so I did not break my head on this. अच्छा, एक क्वेश्चन था 3 raised to the power 333 mod 11. The answer to this was 5. ये तो जो नंबर सिस्टम करते हैं उन्हें रिमाइंडर्स करने में मजा आता है. आंसर इसका था 5. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 5 एज द आंसर? एक आ रहा था कोई 10:7 मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट आंसर. एक था 1877 was one of the answers, which said the product of three numbers is 156,000. ऐसे कुछ था ना. So 24 into 25 into 26. ये था इनका प्रोडक्ट था. तो इनका like it said that a into b into c is this, so you have to find a square plus b square plus c square. Okay, then magic square का आंसर था, that was also Z क्वेश्चन. मैजिक स्क्वायर का आंसर था 36 आई गेस, वो भी Z से कॉपीड क्वेश्चन था. ओके, देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन अ प्रिज्म काइंड ऑफ शेप, right, which said that these are the dimensions 10, 20 and these sides are given as 13. Okay, so it was coming as 1480. इसका जो सरफेस एरिया था वो आ रहा था 1480. Okay, so this was the base and height was height of this prism was 12. So geometry के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे. Then there was one question on like marked price, like it was 37.5%. So it said the cost is 64% of marked price, right? So mark price को 100 ले लो, cost 64 हो जाएगी, इसमें 12% डिस्काउंट था, सेलिंग प्राइस 80 आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी 37.5%. ये इजी क्वेश्चन था, one of the easy pickings. Okay, then drain pipe I did not do. There was one question on drain pipe which was calculation in tensor. 291 से 300 वाला जो even digits पूछे थे, so there will be 15 even digits. काउंट भी कर सकते हैं मैनुअली, और वैसे भी लॉजिकली हाफ इवन डिजिट्स होंगे, हाफ ऑड होंगे. ओके, देन यू हैड एक था 9:4, जो कॉइन थिकनेस करके कोई क्वेश्चन था कि कॉइन की थिकनेस इस रेशियो में है. Then another question was 12,000, like जो वाटर सप्लाई वाला क्वेश्चन था, which said कि if there is 32,000 liters that will be finished in 50 days. So इसका आंसर कुछ मतलब जो भी था क्वेश्चन, 12,000 was the answer to this. Then another question was pi ratio 4, that circle and square. ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन होता है. Circle and like the ratio of circle and square were asked. Okay, then one question was water and acid, right? So उसमें आ रहा था आपका 3:5.
3:5, जिसमें पहले 2 लीटर्स वाटर ऐड करते हैं, फिर 5, फिर 15 एसिड के ऐड करते हैं. सो इनिशियली दे विल बिकम 50% एंड देन बिकम्स 80%, ऐसे करके कुछ था. ओके. सो दैट वाज वन ऑफ द ones. Okay, then there was one question which I did not solve, right? 1 plus 3 plus 6. I will have to solve it later क्योंकि वहां पे solve नहीं होगा. 8 4 3 6, right? First row में row 1. So how many rows are there? I tried solving it, was not able to solve, so left it. Then एक था 665. ये इजी क्वेश्चन था. आई थिंक ये भी किसी जैड या किसी से लिया हुआ था कि लाइक एवरेज 85 है, लाइक बेस्ट प्लेयर जिसमें दिया था, बेस्ट प्लेयर 85 बनाता है, ऐसे करके कुछ स्टोरी थी. एंड इफ यू इंक्रीजेस बाय 7, उसका एवरेज दिया था. कुछ लोग वो एन वाला पूछ रहे हैं. एन का आंसर था 140 मैन, राइट. विच साइड की 35% वर्क इन 7 days 10 hours or n people, right? And then 65% was done by in 14 days and 10 hours by n minus 10 people, right? So ratio based करके 140 was the answer. How many of you got 140 as the answer? मिक्सचर एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे. 3:5 is correct. Okay, then another question was ट्रेन वाला मेरा बना नहीं. 2 hour 24 minute, आई थिंक. एक और कुछ. अच्छा, ए बी सी जिसमें ऑल्टरनेट काम करते हैं. So in that case the answer was coming as 11 days. Okay, now this question looks like, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये एक्चुअली बहुत टफ पेपर था. लाइक जो द वंस वो से कि इसमें ये दिया था कि ए कैन कंप्लीट इन 20 days. पहले स्टोरी पढ़नी थी आपको, राइट. डेफिनेटली आप इसे सीधे नहीं कर सकते. सी करता है 60 days में. ओके, सो इट वाज गिवन दैट डे 1 में ए प्लस बी काम करते हैं, डे 2 में बी प्लस सी काम करता है, डे 3 में ए प्लस सी काम करता है. ओके. अब इसमें पूछा था कि दे कीप वर्किंग, सो हाउ मेनी डेज ए वर्क, कितने दिन करेगा वर्क कंप्लीट करने में. दैट वाज द क्वेश्चन. ठीक है, हाउ मेनी डेज ए वर्क. आंसर आ जाएगा 11 days, राइट. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट टाइम लगेगा. पहले आपको स्टोरी पढ़नी है, समझनी है, फिर सॉल्व करना है. तो डेफिनेटली द क्वेश्चंस वर नॉट इजी. इट्स लाइक अगर आप देखोगे जो कैट लेवल के क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चंस में कैट लेवल के थे. कैट गिव्स यू 20 कितने होते हैं, 22 क्वांट क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, राइट. उसमें टॉपर कोई कर पाता है 22 क्वेश्चंस. अब यहाँ पे अगर आप सोचो कि अगर आपके 40 क्वेश्चन सेम लेवल के आ रहे हैं, आउट ऑफ 50 एटलीस्ट 40 वर कैट लेवल, ठीक है. कुछ 10-12 छोड़ दो, बाकी तो काफी लेंदी थे. अगर आप अच्छे से क्वांट अटेम्प्ट करोगे, सो यू वुड बी एबल टू, लाइक इफ यू गिव सफिशिएंट टाइम टू क्वांट, 50 क्वेश्चंस में से मान लो आपने 40 भी अटेम्प्ट कर लिए, तो डेफिनेटली आपको 75 मिनट्स तो लग जाते. एंड लाइक थिंक रीजनिंग में भी क्वेश्चन आए थे क्वांट के, सो डेफिनेटली नॉट इजी, राइट. अगर किसी की बहुत अच्छी, इवन आई हैव वेरी स्ट्रांग क्वांट, बट आई स्टिल felt that the paper was way too lengthy. Okay, number of person and so number of person concept I'll explain. So let us say work is 120, सिंपल जो हम लेके चलते हैं. सो एक की एफिशिएंसी 6 हो गई, 3 हो गई और 2 हो गई, राइट. सो ए प्लस बी कितना कर लेंगे, 6 + 3 9 यूनिट्स. Then B plus C will do 3 plus 2 5 units, and A plus C will do 8 units. Okay, so एक साइकिल में कितने हो गए, 22 यूनिट्स. 120 करना तो 5 साइकिल्स हो गई. सो 5 साइकिल्स मीन्स 15 डेज. 15 डेज में 110 यूनिट्स हो गए, राइट. ए कितने दिन काम कर रहा है, 2 दिन कर रहा है. सो 15 डेज में ए ने कितने दिन काम कर लिया, 10 डेज कर लिया, राइट. अब 16th डे को
ए एंड बी विल वर्क. सो 119 यूनिट्स कंप्लीट हो गए. ए ने 11 डेज काम कर लिया, राइट. अब 17th डे में बी एंड सी विल वर्क एंड फिनिश दैट रिमेनिंग 1 यूनिट, राइट. सो ए विल नॉट वर्क. सो ए विल टोटल वर्क फॉर 11 days. Okay, so that was the question. And then there was another one on a trapezium I have made, but not written any of the values. I think there was one more question on trapezium. Then there was one question ki 9, 10, 12, 25. ये मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ 9, 10, 11, 25. The question was like there are some people in the company or something. If they are divided in groups of 9, 10, 12, 25, 4 are left. So आपको पता है कि इसका LCM plus 4 होगा, right? And it was given that like remainder 4 आ रहा था, 11 से divisible था. ठीक है. So number आ रहा था आपका 1804, राइट. अगर आप देखोगे 11 से डिविजिबल नहीं, 4 रिमाइंडर आ रहा है. सो पहला नंबर आपका बनेगा 904, बट ये 11 से डिविजिबल नहीं है. इफ यू टेक द नेक्स्ट नंबर दैट इज 1804 व्हिच इज डिविजिबल बाय 11. सो द आंसर वाज 1804. अब इसको क्या करना था, इनटू टीम्स ऑफ 12. सो दिस वाज द क्वेश्चन, राइट. सो 150 टीम्स. तो क्वेश्चन ही ऐसा था कि पहले आपको पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है, फिर डेफिनेटली आंसर देना है. सो इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट लाइक 140 मैन क्वेश्चन तो ये सिंपल था, लाइक ये देखो, ये रेशियो लेना है आपको. ये 35% ऑफ द वर्क इज डन बाय इन 7 days वर्किंग 10 hours a day by n men. तो 10 men लीव कर देंगे, राइट. सो यू जस्ट हैव टू टेक द रेशियो. सो यू विल गेट 7 by 13 is equal to 10, 10 cut हो जाएगा. 7 by 14 will become 1 by 2, and this is n on the top, and here you will have n minus 10, right. So ये आपका आ जाएगा 14n minus 14 into 10 140 is equal to 13n. So n is equal to 140. ये तो easy question था. Okay, so these were the questions. I think we have discussed most of the questions which I attempted. Some of the questions I did not attempt, although I have written them. कि एक था जो train person को pass करे, I found that like question difficult to do, so I skipped it. जिसमें train 40 seconds में 400 मीटर ट्रेन की लेंथ है, 400 मीटर वो कवर कर ले रही है, राइट. एंड I think train takes 20 minutes, 20 minutes to reach. So 5 and 41 were coming the speeds, right. उसके ऑप्शन कुछ ऐसे थे. I marked one of the answers 2 hours 24 minutes 48 seconds. I don't know 48 आंसर होगा कि 24 आंसर होगा या कुछ और ऑप्शन आंसर होगा. So I just marked it randomly. I was not getting time to solve that question. Okay, so these were the questions. I think we have discussed many of the questions across quant, reasoning, and English. Also, I showed you the words that were asked. So definitely it was not a paper, I would say ki was uh, on the easy side, right? It was quite heavy. So the like advice to the remaining candidates would be, see, don't go with any bias. Paper can be of any difficulty. Like last year तक ये होता था कि एक पहले दिन एटलीस्ट स्लॉट आता था इजी, बाद में टफ आते थे. बट दिस टाइम day one itself they have given quite difficult paper which was surprising. ठीक है, यूजुअली पहले दिन इजी आता था, दूसरे दिन से डिफिकल्ट होता था, ऐसा कुछ होता था. इस बार डे वन पे ही बहुत डिफिकल्ट था. बट डोंट गो विद एनी माइंडसेट, डू नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर स्कोर. ठीक है, बिकॉज लाइक ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ठीक है, like it can be anything, right. uh, like it will depend on the slot. Let's hope for the normalization. Okay. अगर सर्वर इश्यू आता है, आई थिंक मेरे सेंटर पे एक दो बच्चों के सर्वर इश्यू भी आए थे. सो डोंट पैनिक अबाउट दैट. एंड you may get topics not present in the first two slot. न्यू टॉपिक्स आ सकते हैं.
ये ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में कुछ हो सकता है, कुछ चीजें आई थी जैसे डीआई था, नहीं था, हो सकता है डीआई आ सकता है। सो आई कैन टेल अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी आ सकता है, इनपुट आउटपुट आ सकता है। ओके, DI आ सकता है, like heavy DI. First slot had two DI sets. This time there were no conventional puzzles. मतलब conventional CT puzzles ऐसे होते हैं, seating arrangement हो गया. There were very few puzzles. It had lot of CAT based DILR sets. ठीक है, ये चीजें आ सकती है। इनके अलावा quant was like number series was not present, like quant में नहीं थी, अलग से थी, so maybe हो सकता है number series, क्वाड्रेटिक, उनके जो टिपिकल पुराने सीईटी में आते थे, क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू। सो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो आज के पेपर में नहीं थे, हो सकता है आ सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग वाज नॉट प्रेजेंट इन, आई थिंक वेरी फ्यू क्वेश्चंस वर देयर। क्रिटिकल रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन थे, पहले स्लॉट में बहुत क्वेश्चन आए थे, राइट। सो फर्स्ट स्लॉट had a lot of CR questions, passage based CR. In my slot there were very few of them. So be prepared for anything. They can ask you any random thing, so don't be biased with that, एंड जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, राइट। डोंट वरी अबाउट कट ऑफ्स एंड ऑल, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हर किसी के मेजरमेंट अलग होते हैं। कोई मान सकता है कि बहुत ज्यादा जाएगी। इन माय ओपिनियन 130 फॉर जेबी वुड बी सफिशिएंट कंसिडरिंग दिस लेवल ऑफ पेपर, बिकॉज वो कैब बहुत टफ थी, क्वांट बहुत लेंदी थी। चलो मान लो किसी क्वांट बहुत अच्छी है, राइट, वो वर्बल में मार खा जाएगा, किसी वर्बल ठीक भी होगी, क्वांट बहुत लेंदी थी। ओके, जो लोग अटेम्प्ट करके आए हैं वो देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, बहुत टाइम लग रहा था रीड करने में, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बन रहे थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो yeah, there was no CR today. So like जस्ट रिलैक्स, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। वैसे भी बहुत लाइक अच्छा एग्जाम मुझे नहीं लगता बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज। होप सारे स्लॉट एक जैसे लेवल के आए, तो फिर भी लगेगा कि हाँ यार, सबका टफ आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत इजी आ जाए, उससे दिक्कत होती है। अगर सारे टफ आएंगे तो इट विल बी गुड, राइट, ऑल विल से हाँ टफ था तो हमारा भी टफ था। सो दैट शुड बी द केस। So that's the analysis and the discussion of some of the questions. Thank you for watching this. Please don't forget to like this video and share with friends who are going to appear on CT, so that they can get an idea what kind of questions were asked. So as we encountered, there were questions on phobia. We have created one PDF and shared on our Telegram group. वहाँ पे आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, so that you can check it out. Okay, so all the best to ones who are going to have their paper tomorrow and day after tomorrow. And once the response sheet are all out, then only one can tell that which was the difficult or easy ones, because होता है subjective चीज रहती है. Okay, so that is the case. So thanks for watching this. Have a great night. Goodbye.